Hello guys. So in today's video we are going to discuss about Mendeleev's periodic table. But before doing that, let me give you a brief introduction. There was a time when scientists were discovering a huge number of elements day by day. और ऐसे करते करते इन एलिमेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि इनको स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया. तो बहुत से साइंटिस्ट ने कोशिश की कि इनको इस तरह से अरेंज किया जाए ताकि इनकी स्टडी करना ईजी हो सके. So there were scientists like Dobrenier, Newland and Mendeleev was one of them who made efforts to arrange these elements in a proper way. Dobrenier और न्यूलैंड ने मेंडलीव से पहले अपने खुद के लॉज एंड पीरियोडिक टेबल फॉर्म किए, बट कुछ लिमिटेशंस के कारण वो रिजेक्ट हो गए. बट फिर भी मेंडलीव ने कोशिश नहीं छोड़ी एंड ही कंटिन्यूड हिज रिसर्च and he gave a very successful form of periodic table. So let's start. मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के साथ उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज किया. और एक एलिमेंट की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, बट ही जनरली फोकस्ड ऑन देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स. एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड. सो मेंडलीव ने 63 कार्ड्स लिए और हर एक कार्ड पे एलिमेंट्स के नाम और उनके प्रॉपर्टीज़ नोट डाउन किया. देन ही ग्रुप्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड देन अरेंज्ड देम इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. एंड व्हाट ही फाउंड वाज दैट कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एट एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ पीरियड के बाद रिपीट कर रही है. सो ऑन दिस बेसिस ही गेव अ लॉ जिसे हम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं. And according to this law, the properties of elements are the periodic function of their atomic mass. अब बात करते हैं मेंडलीव के periodic table की properties. So, Mendeleev periodic table contains vertical groups and horizontal rows. As you can see, there are 8 vertical columns which are known as groups, and there are 6 horizontal rows which are known as periods. सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि देयर वर सम एलिमेंट्स ऑफ हाई एटॉमिक मास जिनको लोअर एटॉमिक मास एलिमेंट के पहले रखा गया. फॉर एग्जांपल, एज यू कैन सी इन 8th ग्रुप एंड 4th पीरियड, कोबाल्ट एंड निकल. कोबाल्ट हैज़ एटॉमिक मास ऑफ 58.94 while निकल हैज़ एटॉमिक मास ऑफ 58.68. बट फिर भी कोबाल्ट को निकल के पहले रखा गया. और मेंडलीव को ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि elements with similar properties can be placed together. Third property was that some gaps were left in the Mendeleev's periodic table. और मेंडलीव ने इसका ये एक्सक्यूज़ दिया कि ये गैप्स कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए हैं जो लेटर ऑन डिस्कवर किए जाएंगे. फॉर एग्जांपल, इन 3rd ग्रुप देयर वाज अ प्लेस लेफ्ट आफ्टर एल्यूमिनियम, और लेटर ऑन गैलियम डिस्कवर किया गया एंड वी फाउंड that it has similar properties as that of aluminium. So it was placed in this gap. Also, Mendeleev said that the name of element can be structured according to the element which comes before that. For example, gallium को Mendeleev ने नाम दिया एका aluminium. एका aluminium इसलिए क्योंकि aluminium was the element preceding the gallium. द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट कि जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया उस वक्त नोबल गैसेस फाउंड नहीं की गई थी. लेटर ऑन जब नोबल गैसेस डिस्कवर की गई तो ये देखा गया कि उनकी प्रॉपर्टीज़ बाकी एलिमेंट से काफ़ी डिफरेंट है एंड ऑल्सो दे आर वेरी इनर्ट गैसेस. सो उन्हें एक नए ग्रुप में प्लेस किया गया जिससे कि पीरियोडिक टेबल का जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर था वो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ. सो इन दिस वे दिस इज़ a form of Mendeleev's periodic table. Now let's talk about some limitations. There was no fixed position for hydrogen. Hydrogen has similar properties with alkali metals and halogens also. For example, hydrogen has similar electronic configuration to that of alkali metals and forms oxides and sulfides of same chemical formula as that of alkali metals. But also hydrogen forms diatomic molecule
and reacts with metals and nonmetals to form covalent compounds like that of halogens. Second limitation is that isotopes cannot be placed in Mendeleev's table. ऐसा इसलिए क्योंकि isotopes have similar properties but differ in atomic masses, so they cannot be placed together. Third limitation is that atomic masses do not increase in regular manner in Mendeleev's periodic table. Now, how it is significant in practical life? हम सभी malls तो जाते हैं for shopping, for entertainment, etc. And let's take for an example, when we go to clothes section, हम देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग groups होते हैं. There is a different group for tops, there is a different group section for jeans, there is a different section for formals. And this arrangement make it easy for us to quickly get what we want in a very proper manner. And on the same basis, periodic classification of elements were made so that we can study large number of elements in a very mannered way. Now, as we discussed that Mendeleev arranged the elements on the basis of their chemical properties and atomic masses, and basically focused on their hydrides and oxides. So try to find a formula of one of the hydrides or oxides of element and try to predict the formula of others. And you can see that you don't have to remember all the formulae and properties of elements. You can just tell them by looking at the periodic table. And also, can you give a right place to hydrogen in periodic table? Try to think about it. Thank you for watching and listening.